start today's class. So, what were we studying? Body fluids and circulation. I think our छोटो part टा बाकी थिला ना electrocardiogram. ये जाए पढ़ा थिला right? Hmm? This much first. अच्छा electrocardiac cycle सर्च देथिली नहीं कि କହିଥିଲି ନା cardiac cycle ଯାଇ ଘରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପଢିଛ ମାଇକି ବେକାରୀ ଟପିକ ଟା ବୁଝିବନି एग्जाम रे पढ़िथियो कार्डियक साइकिल पढ़नी ମୁଁ ଥିଲେ ପକେଇଥାନ୍ତେ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम right ECG you are probably familiar with the sense from the historic typical hospital television देखते a patient is hooked up to a monitor machine that shows voltage track on the skin and makes a sign beep beep beep. I think ना cardiography ଏଇ ଭଳିଆ ଏମିତି ଛାତିରେ ଯୋଡା ହେଇଥିବ ପିପ୍ ପିପ୍ ପି ଦର୍ଶ ଦିଆଯିବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ଏ ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମତେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଏଇଟା ଦେଖି ମେସିନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗେ କି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବାଟା ଭଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯଦି ସିଧା ହେଇଯିବ ତା ମଣିଷ କଣ ହବ ମଣିଷ ନା ନାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବାଟା ଭଲ ନା ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ପୁରା ସିଧା ଲାଇନ ହେଇଯିବ କଣ ହବ ମଣିଷ ମଣିଷ ମରିଯିବ no disturbance means death ଏଇଟା ହେଲା electrocardiogram ର ଯୋଉ machine ଟା as the patient goes into cardiac arrest ନା ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ତାପରେ this type of machine is called electrocardiogram is used to obtain electrocardiogram ए machine को electrocardiogram हुआ जाए ECG machine को कुआ जाए electrocardiograph आ से जो येटा थिला कौन दा कहंती ग्राफ टा कहंती electrocardiogram ECG so this type of machine is called electrocardiograph and the graph is called electrocardiogram देखो 55 so this type of machine is called electrocardiograph and the is called electrocardiogram ECG by electrocardiogram is a representation of electrical activity in the heart तो electrocardiogram कौन ଗୋଟେ representation कि ଆମ हार्ट रे केमिति इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होछ ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल
बुझे तो to obtain a standard ECG as shown ए भलिया देखा जाए ECG टा a patient is connected to a machine with three leads, one each on wrist and the left ankle that continuously monitors the heart rate. तो याको ही जानिबा पई आमे ईसीजी गोटे पेशेंट को कौन करा जाए दीटा लेफ्ट और राइट रिस्ट लगा जाए मशीन रो आ तळ एंकल लेफ्ट एंकल एठी लेफ्ट एंकल रे लगा जाए ए भलिया था ईसीजी टा देखा छै राइट एटा ते कार्डियक साइकिल रे एमिति ईसीजी बने एबे को सर ईसीजी जदी बनी गला तापरे कोन कौ पार्टा कोन रिप्रेजेंट करछि For a detailed evaluation of the heart function, multiple leads are attached to the chest region. Here we talk only about the standard ECG. कौन ना यदि आम पूरा पर्टिकुलर डिटेल जानना चाहूजे देखियो छाती रे भी गेबंदी ए भलिया ता छाती रे लगा है देखा तो हां ता ए भलिया भी हे परियो गोटे डिटेल ECG पाए किंतु आमे या पे देखुने आमे गोटे स्टैंडर्ड ECG भाबुछु आमे कहा ये करछु स्टैंडर्ड ईसीजी कहा को कनेक्ट करे एंकल और वेस्ट रिस्ट कुछ रिस्ट कलाई ता ईसीजी लिखा छै ओके आपको जीवा each peak in the ECG is identified with a letter P to T that corresponds to the specific electrical activity of the heart तो देखो एटी जो जो पीक होची प्रथम हला P तापरे Q तापरे 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 तो कौन पी क्यू आर एस टी तो जेतक पीक होची ए सबु गोटे गोटे लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करा जाउची राइट p wave represents the electrical excitation of the aorta which leads to the contraction of atria जो p wave अछि p टा फर्स्ट हला ना p देखो डायग्राम में से p माने कोन ना इलेक्ट्रिकली इडी देखो p अछि फास्ट ये कौन करछि ना आट्रिया रो जो कंट्राडिक्शन करछि कंट्रैक्शन होछि से आट्रिया कंट्रैक्शन पई शो करछि p व्हाट डज p शोस कंट्रैक्शन ऑफ आट्रिया अंडरस्टूड ना नहीं QRS represents the depolarization of ventricles initiates the ventricular contraction and the contraction starts slowly after the Q marking the beginning of the systole तो क्यूआरएस कौन देखो ना डीपोलराइजेशन ऑफ ऑल वेंट्रिकल वेंट्रिकल जो पोलराइजेशन हेथिला एमती गला वेंट्रिकल गला फुल गला एबा डीपोलराइजेशन तो वेंट्रिकल रो एक्टिविटी को देखो छी क्यूआरएस तबे कंट्रैक्शन स्टार्ट हे होची कहा परे क्यू परे जोड़ा सायस्टोल को मार्क करूची द टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट एटा कोन टी वेव अछि एटा देखो छी कि वेंट्रिकल ता एक्साइटेड स्टेट जो थिला सेटा बे नॉर्मल हे छी a depolarization of the ventricle obviously by counting the number of QRS complexes that occur in a given period one can determine the heart rate of a individual तो यदि हम काउंट करिया केतेटा QRS कॉम्प्लेक्स होची हमें जानि परिबा कि गोटे मनुष्यर केतेटा हार्ट रेट गोटे मिनिट केते थर ता हार्ट टा बीट करछि कोडा QRS के थर होछि नाही गोटे मिनिट रे जेते थर QRS हबो दैट रिप्रेजेंट्स द हार्ट रेट बुझेला ना नहीं
Clear है? Hello. The ECGs are obtained from different individuals and have different shapes of a given lead configuration. Any deviation from this type indicates a possible abnormality or disease. ଯଦି ୟା ଦେହରୁ କିଛି ଡେଭିଏଟ୍ ହେଲା ତା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ abnormal ଅଛି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ disease ଅଛି। ECG କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଉ ଥରେ ରିଡ୍ କର କୁହ ମତେ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ତମ ବହି କାହିଁ ନାହିଁ? अच्छा नोट्स लिखছো ना नहीं? नोट्स पे नहीं लिख देଛ? खाता चेक କରିବି ମୁଁ ମଣ୍ଡେ ଦିନରୁ କାଲି ଚେକ୍ କରୁଛି ଖାତା ଲେଖି ଦଉଛି ଗ୍ରୁପରେ କାଲି ଆଉ ମାନେ କେହି ଏସ୍କେପ୍ କରିପାରିବେନି ବହୁତ ହି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି खाता ଚେକିଂ କରାହବ ବୋଲିକା କୁହାହଉଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖାତା ଚେକିଂ ପାଇଁ ଆଣୁ ନାହାନ୍ତି ଟୁମୋରୋ अरे थर्सडे ରୁ ଆଜି ସैटरडे ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା मायुकी where is your copy सरला तुम करते ना अरे करते ना ठीक अच्छे तो डबल सर्कुलेशन देखिबा the blood flows from strictly by fixed route to the blood vessels the arteries and the veins এটা তো ମୁଁ already ପଢେଇଛି डबल सर्कुलेशन ना दिथर फ्लो होची हार्ट रो राइट एटा काहे के हुए मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखिया पे हुए काहे के हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्लड को सेपरेट रखिया पे ए बडा मूवमेंट करा जाए राइट तो कौन हुए मैं बेसिकली तुमको पूर्व भी एटा एक्सप्लेन करछि कि डबल सर्कुलेशन में कौन हुए ना जो ये थाए कौन तक कहंती our blood goes through the heart twice right तो कौन हुए ना blood flows strictly by a fixed route through arteries and veins basically each artery and vein consists of three layers गोटे आर्टरी बा वेन रो तीनटा लेयर थाए गोटे थाए इनर स्क्वामस एपिथेलियम गोटे थाए ट्यूनिका इंटीमा आ गोटे थाए मिडिल लेयर of smooth muscle cells and electric fibers याको कौन दी ट्यूनिका इंटीमा याको कौन दी कौन फर्स्ट लेयर को ट्यूनिका इंटीमा तापरे हला मिडिल लेयर हला या कौन दी ट्यूनिका मीडिया ता कौन दी ट्यूनिका मीडिया तापरे फाइनल लेयर ता कौन दी ट्यूनिका एक्सटर्ना तो केतेटा लेयर थाए मायुकी तीनटा लेयर थाए कौन कौन व्हाट आर दे and tunica externa. Let us see the diagram of each of the things. Hey, very good. देखो इनर पार्टा जो अच्छी या कहते टुनिका इंटीमा मिडिल पार्टा है टुनिका मीडिया बाहर पार्टा है टुनिका एक्सटर्नल मन रहेगा हाँ माइकी am I clear what are the layers of the blood vessels present in the heart present in the body tunica intima tunica media tunica externa right next the tunica media is comparatively thin in the veins as mentioned earlier
As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the right artery, pulmonary artery, where the blood pumps to the aorta. Right ventricle टा कहाँ को pump करे? Pulmonary artery को, और left artery ventricle टा कहाँ को pump करे? Aorta को. এটা আমি already জানছি না নি? তারপরে deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed to the lungs. Deoxygenated blood टा कोठी ଯିବ? Lungs को ଯିବ. Where oxygenated blood is carried by the pulmonary veins to the into the left atrium. तो कौन है सेठी deoxygenated oxygenate को convert करा ଯିବ. तापर सेठू सी आसीबो कोठी? Left atrium को. तापर left atrium ରୁ कौन हबो? Left ventricle को ଯିବ. तो याकू कहंदी pulmonary circulation. जोड़ा गला pulmonary हाँ माने deoxygenated blood गला oxygenated blood आसीला lungs ରୁ या कहंदी pulmonary कौन circulation. The oxygenated blood entering the aorta is carried by the blood network of blood vessels, areoles, capillary to tissue, where the deoxygenated blood is collected by the veins, venules, vena cava, and emptied into the right atrium. तो कौन हवा ना ये जो ऑक्सीजन ब्लड लेफ्ट atrium रे अछि से लेफ्ट वेंट्रिकल को जिवो तब लेफ्ट वेंट्रिकल रो ऑक्सीजन ब्लड टा पंप होबो कोडी की ऑरोटा को ऑरोटा थ्रू से कोडी की जिवो आर्टरीज आर्ट्रियोल्स कैपिलरी ये सब तक छाडी देबे टिश्यू करके टिश्यू रे पुणी एक्सचेंज हो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड तबे सेठू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हला आसिला माने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो आ जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हला सेटा कोडी आसीबो वेन्यूल्स वेना कावा थ्रू आसी राइट एट्रियम में डिपॉजिट होबो. As if you can remember in the earlier classes we have already discussed this part right here. Left ventricle left atrium ru left ventricle organ ru phuni oxygen deoxygenate gala right atrium ru right ventricle phuni he gala lungs. तो right ventricle ru lungs ru left atrium याको कहंती pulmonary circulation. Left ventricle ru organ ru right atrium याको कहंती कौन systemic circulation. Can you understand? अरे बुझियला ना ना बुझ पालनी को. Can you understand this part? अरे बुझियला बेटा. The systemic circulation provides nutrients, oxygen, and other essential substances to the tissues and takes carbon dioxide and other harmful substances away for elimination. तो ये कौन करे? ये systemic circulation कौन करे? Systemic circulation nutrient, oxygen और other essential जिनिस दिए काहू टिश्यू अब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल जिनिस एलिमिनेट करेंगे. क्लियर है? The vascular connection exists between the digestive tract and the liver called portal system. The hepatic vein carries blood from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation. A special coronary system of blood vessels is present in our body exclusive for circulation of blood to and from cardiac musculation. तो कौन ना दीटा जिनस स्पेशल केस आउ दीटा सिस्टम एग्जिस्ट करछि ए सिस्टम बाहर कौन ना प्रथमतः हेपाटिक सिस्टम पोर्टल सिस्टम एथरे कौन हुए ना इंटेस्टाइन रो बा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रो लिवर को जाए या गंदी हेपाटिक पोर्टल सिस्टम ये ब्लड को इंटेस्टाइन रो लिवर को निए. क्लियर हला? आउ गोटे स्पेशल कौन अछि ना हार्ट रो मसल्स को भी तो ऑक्सीजन दरकार ना नहीं तो गोटे एमिति स्पेशल ब्लड वेसल्स सिस्टम अछि से काम करे खाली हार्ट को लेके डिलीवर करे. काउ डिलीवर करे हार्ट रो मसल्स को ब्लड डिलीवर करे ताको भी तो ब्लड दरकार ना नहीं कम है ऑक्सीजन पे फूड पे न्यूट्रिएंट्स पे. अच्छा जो खाना बनाता है वो भी खाना खाएगा या नहीं खाएगा? खाएगा ना. वही तो
सी पंप करछि किंतु ताकू भी तो पंपिंग पे एनर्जी दरकार ना नहीं सी भी तो तार मसल गुड़ाक रेस्पिरेशन करियो ना करिवेनी तो ता पे स्पेशल कोरोनरी सिस्टम अछि हाउ किसी डाउट अछि कहार को हम नहीं ना ना नहीं अछि देखो normal activities of the heart are regulated intrinsically and auto-regulated by a specialized muscles called nodal tissues present in the heart called myogenic. ଶୁଣ ସେଟା ହାର୍ଟ କୁ କହନ୍ତି ମାୟୋଜେନିକ ତ କଣ ହାର୍ଟ ର ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଏବେ ଭାବ ତମକୁ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଯିବ ମାୟୋ କି ନିଜ ହାର୍ଟ କୁ ପମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କଣ ହବ ଯେମିତି ତମେ ହାତ ହଲଉଛ ସେଭଳିଆ ତମକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଯିବ ତମେ ନିଜ ହାର୍ଟ କୁ ନିଜେ ପମ୍ପ କରିବ ତମେ ମରିଯିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ତମେ ମରିଯିବ କାରଣ ତମେ ହୋମୱାର୍କ କରିବାକୁ ମନେ ହଉନି ବାୟୋଲୋଜିର ଆଉ ଆଉ କଣ କହୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ହୋମୱାର୍କ ମନେ ମନେ ରହୁନି ସେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହାର୍ଟ ତ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଆର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ତ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଟୋ ରେଗୁଲେଟର କରିଛନ୍ତି ଏଆଇ ଜିପିଟି ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ହେଲା କଣ ଅଟୋମେଟିକ ନା ସେ ରେଗୁଲେଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲ ଅଛି ଯାହା କହନ୍ତି ନୋଡାଲ ଟିସ୍ୟୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତାର ସେ ମସଲ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ତମ ମରିଯିବ ତମ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭିଂ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ the special neural center in the medulla oblongata can be moderate the cardiac function through autonomous nervous system ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ନ୍ୟୁରାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଛି କୋଉଠି ମେଡୁଲା ଅବଲାଙ୍ଗାଟା ରେ ସେ କଣ କରେ ନା ଅଟୋମେଟିକ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଡିଆକ ଫଙ୍କସନ କୁ ମଡରେଟ କରେ ଆଉ ଏଏନଏସ୍ ଅଟୋନୋମିକ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ କୁ कंट्रोल କରେ ଏ ଯୋଉ କାର୍ଡିଆକ ଫଙ୍କସନ ଟା ଅଟୋନୋମିକ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା कंट्रोल्ड हुए और मॉडरेट करा जाए neural signal through sympathetic nerves can increase the heart rate and the strength of ventricular contraction thereby the cardiac output ये धर एएनएस का गोटे पार्ट अछि सिंपैथेटिक नर्व्स सी जो गोटे मेसेज देला कि जाओ एटा मेसेज दियो कि हार्ट रेट टा इंक्रीज हो कोन हो इंक्रीज हो आ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन इंक्रीज करा जाय परिबो आ हार्ट रेट इंक्रीज करा जाय परिबो आ कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा जाय परिबो ना जो तमे दौड़छु ना कुकुर पड़िगला पछरे हम तो अधिक रेट दरकार ना अधिक ब्लड पंप होगा दरकार ना नहीं तो हम मुंड दबो हार्ट रेट बढ़ा मुंड कहबो अधिक पंप करो ब्लड अधिक जोर कंट्रैक्ट करो नहीं कार्डियक आउटपुट मतलब जो बाहरला रक्त अधिक अधिक रक्त पंप हो बुझि पारला को सिचुएशन में फ्लाइट एंड फाइट मोड रे एक्सरसाइज करा बेले नहीं मिछ कहला बेले मिछ कहला बेले हार्ट रेट बढ़ जाए देखिबो मिछ कहला बेले हार्ट रेट बढ़ जाए ऑन द अदर हैंड आउ गोटे अछि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल से कौन करिवो हार्ट रेट को कम कर दबो कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को कम कर दबो आ कार्डियक आउटपुट को कम कर दबो कम कर दबो आउ की मॉड्यूलेट करे
adrenal modulatory hormone এটা আছে যেটা adrenaline ছাড়ে adrenaline ରେ ଥାଏ କଣ adrenal modulatory hormone ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି fight or flight ସିଏ ବି cardiac output କୁ କଣ କରିଦବ increase ବୁଝି ହେଲା अरे रेगुलेशन बुझी ହେଲା हां ना नहीं रेगुलेशन बुझी ହେଲା तामे हम देखिबा डिसऑर्डर कोन अछि तामे डिसऑर्डर बुझिया को जेबा बहुत कम डिसऑर्डर अछि गोटे हाई ब्लड प्रेशर गोटे कोरोनरी आर्टरी डिजीज गोटे एंजिना गोटे हार्ट फेलियर चारटा अछि कोन डिसऑर्डर हाई ब्लड प्रेशर हाई बीपी हाइपरटेंशन सुन ना समझ में बीपी अछि ब्लड प्रेशर अछि कोन नहीं मुझे से आगोची समते कोन दिबेगा डिसऑर्डर कोन देखिबा प्रथम डिसऑर्डर आसीबो हाई ब्लड प्रेशर प्रथम डिसऑर्डर कोन हाई ब्लड प्रेशर ओके देखिबा कोन होछि ना हाई ब्लड प्रेशर means it is higher than 20 to 180 normal blood pressure है 20 180 diastolic pressure 120 और systolic pressure है 80 तो अपन 120 to 80 है normal blood pressure जदि ताठो अधिक हबो systolic है कोन 120 mm ଆଉ कोन diastolic है 80 mm जदि याठो अधिक हैला तामे को hypertension if the repeated checks of blood pressure of an individual is 40 140 90 ताले हमें कहबा कि तार हार्ट कौन हाइपरटेंशन अच्छी बा हाई ब्लड प्रेशर अच्छी बुझे जदि लोकर कौन अच्छी ब्लड प्रेशर टा 140 रु 180 140 ला साइस्टोलिक 90 है ना डायस्टोलिक हां ता कौन एकान कहबा हाई ब्लड प्रेशर the high blood pressure leads to heart diseases high blood pressure जो कौन हुए heart disease हुए and also affects the vital organs high blood pressure होले heart disease हबो और vital organ affected है क्लियर है जैसे कि ब्रेन और किडनी हाई ब्लड प्रेशर होले कौन हबो हार्ट डिजीज हबो और हाई vital organ हार्ट किडनी ब्रेन सब affected हाई ब्लड प्रेशर क्लियर है तीन मार्क पढ़ी परिबा एग्जाम में what is hypertension by high blood pressure explain कौन हुए काहे के हुए क्लियर ला था एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन high blood pressure and hypertension तो कमें लिखे high blood pressure is a condition in which the blood pressure is higher than the normal 120 mm to 80 mm mercury next देखो coronary heart disease next कौन लिखिबा coronary artery disease heart disease coronary artery disease often referred to as atherosclerosis affects the blood vessels that pumps blood to the heart muscles. It is caused by calcium, fat, cholesterol, fibrous tissues, which makes the lumen narrower. तो एथरे कौन हुए ना ब्लड को सप्लाई को अफेक्ट करे एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल टा डिपॉजिट है ये कि से जो पार्ट्स टा को से छोटा बा पतला कर दिए लेट मी शो यू द कंडीशन coronary artery disease देखो coronary artery माने कोन एईटा ना जोटा को ब्लड दिए का coronary
हार्ट को जो ब्लड दिए ये देख कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हे कि ये भला देखा या जो हार्ट अटैक भी हुए कौन हुए हाँ अधिक नारो हो गले ब्लड पंप भी कर परिबन ना हार्ट को तो हार्ट को जब पंप मिले माने कोन ब्लड मिलबनी तो हार्ट तो निजे मरछिबो ना नहीं देखा कि फैटी डिपोजिट है देखला नेक्स्ट है एंजिना it is also called angina pectoris a symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles तो कौन ना एथेर कह हम बहुत जोर छाती काटिबो जे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन मिलबो नहीं angina occurs in men and women of any age but it is common in middle age elderly age सर सब men women होई परिबो बुढ़ा मान होई परिबो और एटा मोस्टली कहा को है मिडिल एज लोगन को it occurs due to the conditions that affect the blood flow এটা কম্পেয়ার हुए ना ब्लड फ्लो अफेक्ट से कंडीशन जेटा ब्लड फ्लो को अफेक्ट करे ना बुझेली जेने कि ये फैटी हार्ट फैट ब्लड डिपोजिट हे बाबा आउ भी किछ कंडीशन ता जबु एटा हबो एंजिना हबो देखिबा एंजिना केम देखा जाय लेट अस सी एंजिना सेटाई कहथुनी प्लेग हे जीवो कॉर्नरी आर्टरी insufficient देखो छ कहीं कॉर्नरी पूरा सुखी जो एमती narrowing of the coronary artery जो एंजिना हबो एंजिना कहीं हबो narrowing of the coronary artery हैला एटा स्पेशली बुढ़ा लोक भितर हुए आ भितर हुए बुढ़ा लोक मिडल एज लोक भितर हुए ताबेला heart failure means the state of heart when it does not pumps and effectively enough to meet the body's need the state जेतले से blood pumping करेनी it is not pumping blood effectively blood pumping effectively करेनी आ कोन होय body रो need fulfill हुए नहीं it is called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main reasons of the symptoms of the disease तो कोन हो lungs टा एमती सुखी जीव congestive बुझबला तो सुखी जीव पूरा तो हम कहते congestive heart failure heart failure is not same as heart cardiac arrest जेटा को कहू हार्ट अटैक जोटा कार्डियक अरेस्ट जोटा रखाई नहीं एटा पतला ही गले ब्लड पंप करिवनी आ से तुक तुक बंद हे जबो तो हार्ट फेलियर सेम है हार्ट फेल कार्डियक अरेस्ट हला ब्लड हार्ट बीट स्टॉप हे जबो बा हार्ट अटैक माने हला कि द मसल इज सडनली डैमेज बाय inadequate blood supply बुझला तो मसल उडा जो अछि हार्ट रो से माने इनसफिशिएंट सप्लाई जो कोना हो अरे हार्ट अटैक रे का हो सफिशिएंट नहीं सुखी जबे मसल उडा insufficient blood supply जो डैमेज हो जिवो कोडा को हार्ट मसल्स हार्ट मसल डैमेज हो जिवो हार्ट अटैक रे को हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जिवो हार्ट फेलियर ए दिटा बिनु किछि भी नहीं बुझला हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीटिंग स्टॉप होगा हार्ट अटैक माने हला कोन सेटा डैमेज हो जिवो गोटा ब्लड सप्लाई टा न होकरू कोरोनरी मसल हार्ट मसल का डैमेज हो जिवो बुझला हार्ट फेलियर माने कोन ना ब्लड इफेक्टिवली पंप कर परिबो आ बॉडी रो रिक्वायरमेंट को मीट कर परिबो नहीं यार मेन भी देखेबो कि लंग्स का चिपी हे जिवो कंजेस्ट हे जिवो द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कुहा जाय लंग्स का चिपी जिवो हां कंजेस्ट हे जिवो माने कंजेस्ट में चिपी होबो ना कांसेप्ट क्लियर है so with this the chapter is over I shall check the copy tomorrow काली नवा चैप्टर स्टार्ट हो नवा वीक नवा चैप्टर चलो arigatou gozaimasu